ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्द माधवं कृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। Please recite after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Bowl. So, let's start. And it will become clear to you why I chose this topic. But let's start with a story, okay? And please feel free to answer and talk as you like, or question or share your realizations, reflections. Please just raise your hand, however you want to share, please share. So okay, there is the story. So once upon a time there was a king, and he was wandering around in the forest, and he got very tired, very thirsty, very fatigued with all his wanderings in the forest, and he really just wanted a drink of water. Okay, so he saw this ashram, this hermitage, and he entered into that hermitage. Anyone knows who this is? This is not Parikshit. This is another story. We'll come to Parikshit's story. This hermitage was inhabited by a sage. एक साधु का आश्रम था. So he entered into the hermitage, and the sadhu invited him in. This sadhu invited him in. He gave him some sweet words. So according to our Vedic culture, the conduct is, when somebody comes to your house, you give them, place to sit, you give them some sweet words, you give them some water to drink, right? Even the poorest person can give at least some sweet words, right? If nothing else, he can give them a seat, like, okay, just sit down, right? So this sadhu saw the king of this big kingdom, and offered him a place to sit. So king was very pleased with his hospitality. So he said, okay, he started talking to the sage. So he asked the sage, I'm going to sit a little higher. He asked the sage, who are you? So the sage thought about this question, and he said, I'm a king.
So king was confused. Hey, I am the king. This is like identity theft or what? Why is he calling himself the king? So he said, okay, okay, so you are the king. But then where is your army? Where is your army? So this is what sage replied. And if you want to open Srimad Bhagavatam, third canto, 25th verse, 25th chapter, 21st verse, the sage said, तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजातशत्रवा शान्ता साधवा साधुभूषणा. Whoever has the mic, please read the translation. So we are going to open many books and we are going to go into the pages of Bhagavatam, okay? So what did the sage say? He said that the sadhu is very tolerant, merciful, but most importantly, he said ajat shatru. That a sadhu, a devotee of the Lord, is ajat shatru. Ajat shatru matlab he has no enemies. He is peaceful. He abides by the scriptures. Since I have no enemies, since I'm ajat shatru, I don't need any army. So yes, I'm a king, but I don't need any army because I'm a Shatru. So king said, okay, good answer. So he said, okay, then where is your treasury? At least the king should have some treasury, some wealth, right? Some stored treasure. He said. So then he quoted, not from Srimad Bhagavatam, he quoted from Bhagavad Gita, 12th chapter, 14th verse. He said, Santushta satatam yogi yatatma drida nishchaya. He said that the yogis devotees are very santusht, very satisfied in themselves. They don't need too much money, too much wealth, too much treasury and all this. That's for mundane, ordinary people. They do that. I'm very satisfied. I have many other things. My treasury consists of many other things that I can offer to the ordinary people, to the citizens. My treasury is not just consisting of material jewels and money and all this. So king said, okay, then fine. But where is your kingdom? You should have a kingdom, right? That you rule. He said, yes, I have a kingdom that I rule. And then he again quoted Bhagavad Gita, second chapter, verse 61, and he said, Tani sarvani samyamya yukta asita matpara. He said that my consciousness, that verse says that the consciousness of a sadhu is very clean, very pure, very fulgent. He said, I possess the kingdom of that consciousness that nobody else has. Only I possess such a kingdom. Everybody's consciousness is very polluted. I am the owner of my consciousness. I own this pure, this effulgent consciousness, and I rule it. That's my kingdom. So Sadhu then said, okay, all good. King should at least have a queen. King should have a queen. So where is your queen? And this is what he answered. This is not from Bhagavatam. This is written by Sanatan Goswami in Krishna Stavalila. Very famous verse, very beautiful verse. He says, Mad eka bandho mad sangin mad guru man mahadhana man nistarka mad bhagya mad ananda namostute. He said, oh, my queen, my most loyal partner, my most my best companion is Srimad Bhagavatam. He says, oh, Srimad Bhagavatam, oh, my companion, oh, my teacher, oh, my great wealth. She's everything to me. She's my companion. She's my greatest wealth. She's my best teacher. She's my best friend. She's my bliss. I offer respectful obeisances unto you. So he quotes that she is my best companion. And so that's this Srimad Bhagavatam that you're looking at. For devotees, this is their companion. This is their best friend. This is their, most loyal friend and companion, partner and teacher. So if you want to advance on the path of spirituality, if you want to make your way back to Godhead, back to Krishna, then Srimad Bhagavatam is the way, is the path in Kali Yuga. So Srimad Bhagavatam came at the end of the last Yuga. What was the last Yuga? What was before the Kali Yuga? Which one comes? Yes, Navya. Dwapar Yuga. So Srimad Bhagavatam came once Krishna had left. Krishna left his pastimes. He had finished his pastimes on this earth and he went back to his abode. And at that time, through Parikshit Maharaj, through this very famous king, Parikshit Maharaj, this Srimad Bhagavatam arose. Okay, this was just at the beginning of Kali Yuga that Srimad Bhagavatam came.
manifested itself. And it was meant to be the path of salvation, for path back to Godhead, so that we can see Krishna, we can appreciate our relationship with Krishna, we can understand him, understand his relationships with various devotees. So that is the Srimad Bhagavatam. Who here has read Srimad Bhagavatam? Reading. Yeah, read or reading. Yeah, reading. Even if you have read one verse, one word, even one word is purifying. Yes, okay. Who has Bhagavatam but has not read it, but wants to read? Who has Srimad Bhagavatam? Okay. Okay. Who doesn't have Srimad Bhagavatam but would one day like to have it in their house, have Krishna in their house in the form of Srimad Bhagavatam? Okay. Okay, yeah, that counts, yes. Okay. So now let's come to another story, okay? Another story. Mataji, was that King Vasisht and Vishwamitra story? No, Prabhuji, some king. But let's come to another king. So this king, also very thirsty, also very tired, roaming about in forest. He wanted some relief from thirst. He wanted a place to sit and just get a few drops of water. Who's this king? Huh? This is Parikshit. This is Parikshit. So Parikshit Maharaj, okay? Who is Parikshit? Everybody knows? Whose son or whose grandson? Pandav's grandson. Which Pandav? Arjun's grandson, right? And Abhimanyu's son. Abhimanyu, who the great hero who was unfairly killed in the battle, right? So he's Abhimanyu's son, Abhimanyu and Uttara's son. We'll come to his pastime in a few minutes, but Parikshit Maharaj was the one who was wandering around in the forest, and he came across this hermitage. So another king. But this sage did not welcome him. Well, not that he did not welcome him. This was Shamik Rishi, and he was a great mystic yogi. He was sitting in trance, and he was sitting in samadhi. He was very deeply connected to the Lord through his yogic practices. And so he was sitting with eyes closed in asana, and he did not realize that the king had entered his ashram. So king asked the rishi a few times for some water, but he did not get any response. Now, Parikshit Maharaj, we have to all know that he is a great devotee of the Lord. Very, very, he's a pure devotee of the Lord. He was somebody that Krishna saved him in the womb of his mother. And we'll come to that story also. But Parikshit Maharaj was saved by Krishna personally in the womb of his mother Uttara. So that was his position. He was very, very advanced. And he was a righteous king, very, very virtuous king. He ruled the kingdom through the path of dharma. He was a representative of the Lord. And he had actually even delayed Kali Yuga. He had even subdued Kali Yuga from coming. So the Kali Yuga, remember this is end of Dwapar Yuga. Kali Yuga is not able to start until a pure devotee like Parikshit Maharaj is ruling, right? So Krishna, or a premise needs to be made, an arrangement needs to be made where Parikshit Maharaj needs to go, right? So that Kali Yuga can start, right? So what premise was made? That for a few minutes, Parikshit Maharaj's intelligence was bewildered. And what did he do? He did an act that was not becoming to a devotee. What did he do? He got very frustrated with this yogi from not welcoming him, for not giving him any water, for not even responding to him, not even giving him any sweet words, breaking all the conducts of the Vedic culture. And so he took a dead snake that was lying on the ground and put it over Shamik's neck, okay, as a sign of disgrace. Because dead snake or a snake typically represents something very evil or something very inauspicious. So to say that, all inauspiciousness will start now. And that's what happened. All inauspiciousness started. Parikshit started walking back to his palace, but he was taken over by deep lamentation. What did I do? How did I behave like this with a Brahman who was sitting, meditating on the Lord? Why did I do that? He's lamenting. He's very upset, disappointed with himself. And on the other side, where Shamik Rishi's ashram, his son, Shamik's son, Shringi, saw this whole event, and Shringi cursed
Parikshit Maharaj. Shringi is a mere kid. He's like a teenager. So he cursed Parikshit to say, he said that Parikshit will die by the bite of a snake bird or a flying serpent in 7 days. So his days on this material world is only for 7 days now. And so what did Parikshit do? Yeah. Cursed him back? No. Parikshit was very powerful, right? He could have retaliated, captured this Shringi, this little kid who dares to curse the king and give him some kind of corporal punishment or something he could have done. What did Parikshit do? How did he retaliate? Can we use the mic? Please pass the mic when somebody's answering. He doesn't accept it because he thought that he could feel from, or no, that he obviously felt bad about what he had done to the people. So he accepted the punishment as was given to him because he felt regretful. He was resenting this whole incident, and he thought this punishment was, even though it was a little excessive, little harsh, not little, quite harsh. It was very harsh to give somebody death for just a small gesture like that. But still, he accepted it with grace. And so then comes the next verse. Please let's open Bhagavatam 1.18.48, first canto. Yes, 18th chapter and 48th verse, please. So he said, what is said about this act of Parikshit Maharaj? It is said that the devotees of the Lord are so forbearing that even though they are defamed, cheated, cursed, disturbed, neglected, or even killed, they are never inclined to avenge themselves. So very, very advanced platform for a pure devotee of the Lord compared to ours, where if somebody says even one thing that's off to us, right, we become really big judge and start giving them punishment just like Shringi did. But actually the platform of a pure devotee is that even if they are treated very harshly, very roughly, very badly, they accept it, thinking that this is the arrangement of the Lord, that Lord wants me to go through some kind of purification through this act. So let me ask you, in this world, is this a place of lot of comforts and happiness and everything will go as you plan? Yes? Who says yes? No, right? It is a place of miseries. It is a place of discomfort. It is a place of constant disturbances. It is a place where your plans may not go as you want, right? Your plans may be constantly foiled. Everybody agrees with this? Things happen all of a sudden where you had no control on. That is what this world is, right? Dukkhalyam, right? Dukkhalyam or anityam, ashashvatam lokam, right? So this, and so what is the attitude of a devotee towards this type of problems when they suddenly happen, when these type of reversals happen, or somebody is provoking you? They do what? They just tolerate, right? You just tolerate. So they do not take revenge, they do not retaliate, they don't get offended, they don't counter curse, right? That is what Parikshit Maharaj did. So he did not counter curse or anything. So this is the status of Parikshit Maharaj. So I labeled this talk the adventures of some Bhagavats, adventures of Bhagavatas, which basically means that in this world there will always be adventures, there will always be problems, there will always be disturbances, difficulties. And so these Bhagavats had exceptional difficulties, much bigger than ours, much bigger than what we face in our day-to-day life. And how did they respond to those difficulties? Those difficulties, those problems when they come, right? Like Parikshit Maharaj's situation. Is it very fearful? Like he is going to die in 7 days. Very fearful, right? It is very fearful. But there is one advantage in this situation. Can somebody figure out that advantage? Huh? Yes. Yes. He's aware that he's going to die in 7 days. He knows when he's going to die. That is the biggest advantage Parikshit Maharaj has. Do we have that advantage? Do we know when we're going to die? In 5 minutes, maybe 10 minutes, 2 hours, 5 days?
10 days? Nobody knows, right? Anytime, maybe 5 minutes. We don't know. But Parikshit Maharaj, yes, it's a very, very fearful situation. So we'll see how devotees handle when they have fearful situations like this. What did he do? He had 7 days. He did not waste a single minute of that 7 days. Not that devotees ever waste their time anyways. They utilize their time. Every single second matters. Every single minute matters. Human life is very precious. But now he had 7 days and he had to use them. So what did he do? He got some spiritual teachers, his Brahmans and gurus and advisors, spiritual advisors. He gathered them around and he said, okay, I want to make the best use of these 7 days. I have accepted this curse. I've accepted my death. The snake bird is going to bite me in 7 days. Can you tell me how to make the best use? And what did they tell him? And like read afterwards. Here Srimad Bhagavatam. And then they found the best person to hear it from. They said the best person to hear Srimad Bhagavatam is the Vairagya Chudamani, the most detached personality, is the son of Vyasadeva. Vyasadeva, who has compiled the Srimad Bhagavatam, the son of Vyasadeva, Shukdev Goswami. Hear it from him. All the advisors, all the Brahmins, all the gurus collectively recommended, hear Srimad Bhagavatam in your last 7 days from Shukdev Goswami. So this is what we need to do in our life. With one pointed attention, one should constantly hear about, glorify, remember, and worship the personality of Godhead, who is the protector of the devotees. This is what we are supposed to do every day. But now that he knew he had 7 days left, he did that the whole time, without eating, without sleeping, nothing. That same king who was so thirsty that he got frustrated with the sage, that same king now sat for 7 days without eating or drinking even a drop of water, hearing Srimad Bhagavatam. Right? So, this is, yes. Huh? Oh. So then next, I'm sorry, Mataji. Let's go to the next. Fir kya hua? Okay. So let's talk about fear. Since the main topic is fear, this is a fearful state for Parikshit Maharaj. And what did he do? He took shelter of Srimad Bhagavatam. ठीक है? भागवतम का उन्होंने आश्रय लिया. अब देखना ये है कि फियर क्यों होता है हमें. सबसे पहली सिचुएशन है कि फियर क्यों होता है. तो उसके लिए ये वर्स आती है भागवतम में. If we can open please 11th canto, 2nd chapter, 37th verse. So इसमें बताया कि ये फियर क्यों आता है. भयम द्वितीयाभिनिवेशितास्यात् ईषादपेतस्य विपर्यो स्मृति तन्मायया तो बुधा आपजेतम् भक्तैकैशं गुरुदेवतात्मा. So this verse says, yes please. Please pay attention कि fear क्यों होता है हम लोगों को, डर क्यों लगता है. Anybody, before we read, anybody knows कि डर क्यों लगता है? Uncertainty, okay. किस बात की uncertainty है? Can you give Mataji the mic? Uncertainty of everything. You do not know what's going to happen next. Okay. You can't prepare for it. Right. Exactly. मतलब आगे क्या कि जैसे हमारी हेल्थ को कुछ हो सकता है, we can lose a loved one, हमारी प्रॉपर्टी को कुछ हो सकता है, हमारे ऑनर को कुछ हो सकता है, हमारी जॉब जा सकती है, हमारे घर को कुछ हो सकता है. यही डर, right? Okay, so perfect. Yes, can you read? हाँ, खराब चीज क्या होती है? किसको खराब होता है? हाँ, खराब किसका? हमारा कुछ. ओके. मतलब हमारे शरीर को, हमारी शरीर से रिलेटेड चीजों को, राइट? ओके. क्योंकि आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता, खराब नहीं कर सकता, तो सिर्फ शरीर से रिलेटेड ही चीजों का डर रहता है, राइट? ओके, गुड. लेट्स रीड द ट्रांसलेशन. Fear arises when living entity misidentifies itself as material body because of absorption in the external pleasure energy of the Lord.
When the living entity thus turns away from the supreme Lord, he also forgets his own constitutional position as a servant of the Lord. This bewildering, fearful condition is affected by the potency or illusion of Maya. Therefore, an intelligent person should engage unconditionally in the unalloyed devotional service of the Lord, under the guidance of a qualified spiritual master, whom he should accept as his worshipful deity and as his very right and soul. So इसमें क्या दो तीन वर्ड्स हैं that I want you to focus on. इसमें एक शब्द आता है अब so पहले भयम है, ठीक है. भय किस लिए होता है? अभिनिवेशिता. अभिनिवेशिता का मतलब है एब्जॉर्प्शन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. इस दुनिया में रमने से भय आता है. तो जितने लोग जितना ज्यादा इस दुनिया में रमे हुए हैं उनको उतना ज्यादा भय रहेगा. क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा अटैचमेंट बना ली हैं. ये मेरी ये चीज है, वो चीज है, ये मेरा ऑनर है, ये मेरी जॉब है, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है. जैसे ही वो अटैचमेंट जिस दिन कटेगी, जिस दिन जाएगी, जानी तो है ही क्योंकि टेम्परेरी है, तो जब वो जाएगी और उसके जाने का आपको डर रहेगा. So the people that are very very absorbed in this material world, abhiniveshita gives bhai. और द्वितीय का मतलब है separate from Krishna. You think you are separate from the Lord. ठीक है. तो भगवान से अलग जिन चीजों से हमने अटैचमेंट बनाई है, नॉट भगवान से रिलेटेड चीजों में, बल्कि भगवान से अलग चीजों में, मतलब इस भौतिक संसार में जो हमने अटैचमेंट बनाई है उससे आपको भय आता है. दूसरा लिखा है ईशाद अपेतस्य. ईशाद अपेतस्य मतलब जितने भी लोग टर्न्ड अवे फ्रॉम लॉर्ड हैं, जितने भी लोग भगवान से विमुख हैं कि हम भगवान की तरफ नहीं देखेंगे, हम भगवान से अलग अपना काम करेंगे, हम एंजॉय करेंगे, हम सब कुछ भोगेंगे, हम सब कुछ हम ही सबसे बड़े हैं, लॉर्ड हैं, तो फिर उन लोगों को भी भय रहेगा. ठीक है. और तीसरा बात लिखिए विप्रयो. विप्रयो का मतलब मिस आइडेंटिफिकेशन. जैसे आपने बोला ना कि बॉडी के साथ, क्योंकि हम बॉडी की आइडेंटिफिकेशन है, हमें लगता है कि हम ये शरीर हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप ये शरीर हो और इस शरीर की सारी चीजें आपकी हैं, इसीलिए आपको भय होता है. अगर आपको एक बार ये पता चल जाए कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ये सोल हूँ जो इस शरीर में सिर्फ टेम्परेरी रह रही है और इस शरीर की सभी चीजें टेम्परेरीली दी गई हैं मुझे, दे बीन गिवन टू मी जस्ट फॉर अ time period. This is just a chapter in my eternal existence. This is just one chapter of the book, and the page will turn and the next chapter will start. Once you understand that, your anxiety, your fear will go down, right? Lekin we feel so much confused, bewildered, because we think we're this body. And so look at this beautiful verse. It says, this is not from Bhagavatam, this is from another scriptures. Bhoge rog bhayam, कि जिसको जो भोग करते हैं लोग, उनको रोग का डर होता है, राइट? जितना खाओगे पियोगे ऐश करोगे उतना रोग रहेगा बॉडी का. कुले च्युति भयम, जिसकी फैमिली रेपुटेशन बहुत अच्छी है, ऑनर बहुत ज्यादा है, उसको फॉल डाउन कर, कहीं हमारा नाम खराब ना हो जाए, डिसऑनर ना हो जाए, राइट? प्रेस्टीज चली ना जाए. वित्ते नृपालाद भयम, कि जिसका वेल्थ है उसको रूलर्स का डर रहता है कि गवर्नमेंट या रूलर्स वो लोग मेरी वेल्थ ले लेंगे. माने दैन्य भवन, अगर मान है तो ह्यूमिलेशन ना हो जाए. बल है तो बल कहीं चला ना जाए, फेड ऑफ ना हो जाए. अगर रूप है तो वृद्धवस्था, जरा जरा मतलब ओल्ड एज ना आ जाए, राइट? जो बहुत सुंदर लोग हैं, जो लोग शास्त्रवादी हैं, मतलब जिनको शास्त्र स्क्रिप्चर्स अच्छे से आते हैं, उनको किस बात का भय है? कि कहीं हमें कोई ओपोनेंट आर्ग्यू या डिबेट में हरा ना दे, राइट? उसका वाद विवाद में हरा ना दे, उसका भय है. गुणे खला भयम, कि जो जिसके पास क्वालिटीज हैं उसको भय है कि कहीं मेरी क्वालिटीज या मेरे वर्च्यूज, मेरी वैल्यूज चली ना जाएं. काय कृतंतात भयम, जो जिनको जो बॉडीली कॉन्शियसनेस में है, उनको डेथ का फियर है. सबसे बड़ा फियर तो डेथ का ही है सबको, राइट? सर्वम वस्तु भयान्वितम, मतलब इस दुनिया की हर चीज में ही आपको भय है. भुवि नृणाम वैराग्यम एवं भयम, लेकिन जो इन एंजॉयमेंट से जुड़ा नहीं हुआ, जो डिटैच्ड है, ही विल बी अभयम, ही विल बी फियरलेस. तो ये सब चीजें हमको भय देती हैं इस दुनिया में. तो भागवतम लेकिन हमको इस भय से निकालती है. यस प्रभु जी, प्लीज शेयर. यस प्रभु जी. Actually, everybody is comfortable with it. I have class 11, since then I have some confusion. This is the question. Because I come from very
and the purpose of that. I'm always confused with it because जैसे भागवत में लिखा है there are those texts तो मुझे ये लगता है कि जैसे गौतम बुद्ध ने किया सब कुछ छोड़ के he left and जैसे भागवत में लिखा है that's what he is saying तो हम लोगों को अगर जीवन का वही मार्ग हम लोग होना चाहिए according to Lord Krishna and Bhagavad. So why we follow this system? Because when we start going to school, there's a purpose. When we go to college, there's a purpose. And marriage, all these attachments we are getting into, right? Either we don't do it, and we just go to ashram and follow that route, or if we don't have that route, or is it too difficult or it's not available, then the big question is how to stay in this society and stay detached. Yes, Prabhuji, I think we got your question. Can you answer, Prabhuji, based on Bhagavad Gita? Yes. So again, I'll just rephrase the question. Summarize the question. So basically, the question is that when we are supposed to be detached, then why do we get so much attachment throughout our life? We keep progressing in this life and getting family, children, all this, which is more attachment. So why is the question? So why do we do that? Is that the right path, or is the path of detachment completely? Is that the right path? So actually, Arjuna asked this question to Lord Shri Krishna. That you know, why don't I just leave all this? Why am I even fighting? Why am I challenging my family members and all this? So why am I doing all this? And he actually asked this specific question: which path is better? Should I leave everything and take sannyas, or should I continue? So what did Krishna say? We all know, right? Krishna said it is better to do your duty, whatever your duty is, to do your duty thinking about Krishna. So you are not doing the duty, you are not fighting for yourself, you are fighting for Krishna, because that is the right path, that is the righteous path. So that is why you are fighting. So coming back to just practical, to explain how it is for our life, हमारे लिए कैसे लागू होता है वो देखने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए? भगवद गीता में भागवत में क्या बताया हुआ है कि हमें अपनी फैमिली के साथ चलते हुए, हमें अगर हम फैमिली वाले हैं, सब लोग फैमिली छोड़ के नहीं रह सकते, अगर हम फैमिली वाले हैं, गृहस्थ हैं, तो हमें अपनी फैमिली को और पाथ भागवत लेके जाना है, भगवतम के पाथ पे, वो कृष्णा के पाथ में, और कृष्णामय बनाना है, और अपनी लाइफ को हमें कृष्णामय बनाना है. इसको एक दो लाइन में ऐसे बोल सकते हैं. अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं लड़ूं या मैं सन्यासी बन जाऊं? Should I be a warrior or should I be a spiritualist? कृष्ण ने कहा, neither, be a spiritual warrior. So this is the instruction for us. Don't just be a husband, be a spiritual husband. Don't just be a doctor, be a spiritual doctor. Don't just be a scientist, be a spiritual scientist. Meaning you add detachment to all the duties that you're doing. तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको त्याग की भावना से, उसको डिटैचमेंट की भावना से करो, उसका फल भगवान को अर्पित करते हुए, मानते हुए कि मेरे को इस संसार में अपनी कुछ ड्यूटीज निभानी है, वो करते हुए, लेकिन उनको इस तरीके से करना है कि वो मुझे बांधे ना इस दुनिया में और मैं भगवान की तरफ बढ़ते जाऊं. और जितनी भी मेरी अपनी अटैचमेंट्स हैं, जैसे मेरे डिपेंडेंट्स हैं, उनको भी अपने साथ लेके जाऊं. उनको हमें तारने की ड्यूटी बनती है एक्चुअली. इसलिए बोलते हैं कि किसी को भी माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, देवता नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने डिपेंडेंट्स को तार नहीं सकता. तो इसीलिए हमें यहाँ पे ड्यूटी भी करनी है, लेकिन ड्यूटी ऐसे करनी है कि वो हमें बांधे नहीं, और अगर आप बांधने वाली तरीके से ड्यूटी करोगे तो आपको भय आएगा. तो कमिंग बैक टू, इज दैट ओके प्रभुजी? प्रभुजी विल टॉक मोर आफ्टर. लेट्स कंटिन्यू ऑन द टॉपिक. So this is the next. So परीक्षित महाराज ने भागवतम का सहारा लिया जब उनके अंत 7 days आए, राइट? अब देखते हैं जब डिवोटीज एक और डिवोटी का लेते हैं. ये हैं परीक्षित महाराज की मदर. So this is Uttara. So can we read these really loud, these 3 verses? What happened to her? This is the situation. Ashwathama, son of Dronacharya,
ने ब्रह्मास्त्र फेंका था उत्तरा की तरफ. When Uttara was pregnant with the Parikshit in the womb, right? Parikshit was in the womb. So Ashwathama threw Brahmastra at Uttara to kill the last child of Kuru dynasty, which was little Parikshit, right? He was the last descendant of Kuru dynasty. तो वो सारे कुरु वंश को खत्म कर देना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र फेंका था. तो उत्तरा ने क्या किया जब उसने ब्रह्मास्त्र देखा अपनी तरफ आते हुए? Yes, Madhu, please. Madhu, you can read all three. Hare Krishna. Uttara said, O Lord of Lords, Lord of the universe, you are the greatest of mystics. Please protect me, for there is no one else who can save me from the clutches of death in this world of duality. O my Lord, you are all powerful. A fiery iron arrow is coming towards me fast. O my Lord, let it burn me personally, if you so desire, but please do not let it burn and abort my envoy. Please do me this favor, my Lord. Sut Goswami. Sut Goswami said, having patiently heard her words, Lord Shri Krishna, who is always very affectionate to his devotees, could at once understand that Ashwathama, the son of Dronacharya, had thrown the Brahmastra to finish the last life in the Pandav family. तो इस तरीके से परीक्षित महाराज को खुद स्वयं भगवान ने उत्तरा की वूम में जाकर बचाया था, right? So that is how valuable, that is how wonderful, how important Parikshit is, that Krishna saved him himself, right? फिर एक तो उत्तरा ने आपने देखा उन्होंने भगवान का सहारा लिया. तो जब भी इस समय क्या पता चलता है कि जब भी हमें कोई विपदा आए, कोई प्रॉब्लम आए, राइट, कोई डिफिकल्टी, डिस्टर्बेंसेस which will come in this world, what do you have to do? You have to do what Uttara did. Please protect me, right? Just call out to Krishna, pray to Krishna, but not only during your difficulties, even during your good times. The problem is we are not taking shelter of Krishna during our good times. So that is why you have to do Nityam Bhagavad Sevaya. You have to remember the Lord every day. You have to find some time to detach, disconnect from this world and connect to Krishna, so that, and not just because he will help us in difficulties, but because that is the nature of the jiva, to stay connected to Krishna, right? To not connect to the material world so much, to not immerse in the material world so much. लेकिन हम क्या है, सारा ही दिन घंटे आफ्टर घंटे बस इस दुनिया में ही रमते रहते हैं और चीजें ढूंढते रहते हैं रमने के लिए. और अभी कलयुग की स्थिति ऐसी है कि इतनी सेंस ग्रेटिफिकेशन है कि अगर कोई व्यक्ति बोर भी नहीं बैठ सकता. एक्चुअली अगर बोर्डम मिल जाए हमें, that will be good for us. If we have that luxury of getting bored, we do not have the luxury of getting bored because we are constantly, कुछ नहीं होगा तो टीवी चला लेंगे, इंटरनेट पे लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, ऊपर से नीचे घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं. So they're not disconnecting from this world at all. और जब बोर होते हैं तो उसको इतना गलत माना जाता है. पहले लोग बोर होते थे तो भगवान से कनेक्ट करते थे, भगवान का सहारा लेते थे, भगवान की कथाएं सुनते थे, रामलीला करते थे, कृष्ण लीला करते थे, राइट? लेकिन अब हमारे पास बोर होने की लग्जरी नहीं है, तो इसीलिए वी आर जस्ट इमर्स्ड इन गेटिंग मोर एंड मोर एंटैंगल्ड एंड इमर्स्ड इन दिस वर्ल्ड. एंड पीपल आर वेरी प्राउड ऑफ दिस कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ. लेकिन हमारे पास भगवान के लिए से कनेक्ट करने के लिए, which is the nature of the jiva, बिल्कुल भी टाइम नहीं है. So if you connect to Lord on the daily, these are not the devotees that just took shelter of Krishna in their difficult times. They were always connected to the Lord even in their good times. So Lord is not just saving these devotees all of a sudden कहीं से आके कोई materialistic व्यक्ति. Actually कर्मी व्यक्ति, Krishna has no business with them much. Why? Because of their absorption in the material world. So Krishna he lets karma takes care of them. He let them suffer their karma or enjoy their karma according to their own destiny. They make their way in this life, right? But Krishna takes personal interest in the life of devotees who are actually disconnecting themselves from the world and absorbing themselves in Krishna on a daily basis, right? तो ये उत्तरा की स्थिति थी. अब नेक्स्ट डिवोटी की देखते हैं. ये अनदर भागवत, और ये भागवत तो व्यक्ति भी नहीं है. he is not even a human, he is an animal. He is गजेंद्र. तो गजेंद्र की कहानी पढ़ते हैं. Can we
read 2 verses each. Mataji, would you pass mic and read the translations, please? So this comes in Srimad Bhagavatam 8th canto, 2nd chapter. नहीं तो ऊपर से you can read. यहाँ से. The elephant and the crocodile fought this way, pulling one another. Mataji 8th canto खोलोगे? Water for 1,000 years. Upon seeing the pride of the dead fight, the demigods were very surprised. Text 30. Thereafter, because of being pulled into the water and fighting for many long years, the elephant became diminished in his mental, physical, and sensual strength. Crocodile, on the contrary, being an animal of the water, increased his enthusiasm, physical strength, and sensual power. So the scene here is that a crocodile has grasped the foot of Gajendra, who's an elephant, right? Gaj means elephant. He was the king of the elephants. और उनके सारे जो घर के लोग हैं, wives हैं, बहुत सारे family members हैं, वो शोर पे खड़े होकर देख रहे हैं कि वो फंसा हुआ है पानी में, और ये फाइट हजारों साल तक चली, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे और कोई उनको निकाल नहीं पा रहा था. तो क्या किया फिर गजेंद्र ने? Let's read next too. When the king of elephants saw that he was under the clutches of the crocodile by the will of Providence, and being embodied and circumstantially helpless, could not save himself from danger, he was extremely afraid of being killed. He consequently stopped for a long time and finally reached the following decision. So he was afraid of being killed, right? Afraid of death, just like we all are, always afraid of uncertainty, afraid of death, and so many other things. So what did he thought what to do, and what did he do finally? He saw nobody could rescue him. अगर आप trouble में हो, actually आपके family members, कोई भी कितना भी चाहे वो आपको नहीं निकाल सकता. कोई आपको रोग हो जाए, कोई आप किसी बुरी problem में फंस जाओ, तो कोई कितना भी चाहे नहीं निकाल सकता, right? What happened to Mother Draupadi, right? Nobody else could save her. So she had to call out to Krishna. So this is what Gajendra did. Yes. The other elephants who are my friends and relatives not rescue me from this danger. What then to speak with my wife? I cannot do anything. It is by the will of the Providence that I have been attacked by this crocodile, and therefore I shall seek shelter of the Supreme Personality of Godhead, who is always the shelter of everyone, even of a great person now. So he said, I'll take the shelter of the Supreme Personality of Godhead. So Canto 8, Chapter 2 में ये हुआ incidents in which Gajendra was caught in the water by the crocodile. और अगले अध्याय में क्या हुआ कि उन्होंने prayers offer की to the Supreme Personality. तो बहुत heartfelt prayers offer की, and Krishna came and he offered him. He did not have anything to offer. What did he offer? A little flower, a little lotus जो वहाँ पानी में उग रहा था, वो ऑफर किया, क्योंकि हमारे पास जो भी है, जितना भी हम ऑफर कर सकते हैं, we should offer. So he offered that flower. तो ये गजेंद्र. तो आपने देखा 2-3, आपने परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल देखा, उत्तरा का एग्जाम्पल देखा, जब उनको fearful states आई, fearful conditions आई, गजेंद्र का एग्जाम्पल, तो उन्होंने भगवान का शेल्टर लिया, राइट? फिर अच्छा, अगर हम भगवान का शेल्टर नहीं लेते, भगवत गीता के हिसाब से क्या होगा जब अंत समय आता है, तो कृष्णा की कौन सी फॉर्म आती है? कृष्णा तो दिखते ही है सबको किसी न किसी फॉर्म में, but Krishna says in Bhagavad Gita, actually the shloka has become very famous these days for good or bad reasons. Krishna says, I come as time, right? You will see me as time. So he says, Kalo Asmi, time I am, right? And I've come to destroy all the people. I am the great destroyer of the worlds. I think yes, Mataji, इसलिए भागवतम आए. इसे बोलते हैं कि कहीं भी उससे कृष्ण भगवान जब कुछ भी बंदा को देखने के सातों दिन ऐसे करके बैठे हैं. तो ये माता जी बोल रहे हैं कि भागवतम में कृष्णा ने स्वयं एंट्री ली है.
So coming back to a point, so Krishna says, Kalo Asmi, right? That Kala Kalai Tamaham. I'm the subduer. I'm the greatest subduer. I'm time. And I'll come in the form of time to meet those people that are, just absorbed in this world. Then I'm the great destroyer of the worlds, and I'll come to destroy all the people. Mrityu Sarva Haras Chaham. He says in Bhagavad Gita, Mrityu Sarvas Haras Chaham, that I am death, मृत्यु, और मैं सब कुछ हर के ले जाऊंगा. तो जितना भी इस दुनिया में मेंटेन करना है कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली इट विल ऑल गो, एंड ही सेज दैट आई विल टेक इट ऑल अवे. मृत्यु सर्वस हरस चाहम. लेकिन डिवोटीज की स्टेटस क्या है? डिवोटीज का, या जो भगवान से कनेक्ट करते हैं, उनका स्टेटस क्या है इन दिस वर्ल्ड? उनका स्टेटस है आयुर्हर्ति वै पुंसाम उदयन अस्तंचयन असौ तस्यर्ते यत् क्षणो नीता उत्तमा श्लोका वार्तया. तो क्या बोलते हैं कि जैसे सन राइज और सेट होता है, उदय और अस्त होता है, तो सभी लोगों का समय जा रहा है, टाइम कम हो रहा है, राइट? और फिर उनका अंतिम समय आ जाएगा. हम बोलते हैं ना समय आ गया है, इसका समय आ गया है, अंतिम समय आ जाएगा. समय कौन है? कृष्णा बोलते हैं मैं ही समय हूँ. तो समय आ जाएगा आपका, आपके डेज एंड नाइट्स पास होते जा रहे हैं व्यर्थ में, यूजलेस चीजों में, दुनिया की यूजलेस चीजों में पास हो रहे हैं, वर्थलेस चीजों में. उनकी आयु हरती जा रही है, आयु कम होती जा रही है. लेकिन डिवोटीज का क्या स्टेटस है? डिवोटीज का स्टेटस ये है कि जो डिस्कस करते हैं टॉपिक्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, except for those people, their ayu is not decreasing. Why? Because they are going towards their eternal existence. They are going to start the chapter of their eternal spiritual existence after this birth. So who will they see? The time form of Krishna or some other form? The Shyam Sundar form of Krishna, the Radha Raman, the Radha Madan Mohan, the Radha Govinda, Radha Gopinath, that form of Krishna, right? So Baki Bihari form, yes. So कृष्णा, अगर आपको टाइम की तरह, काल विश्व रूप की तरह देखने हैं, जिनके इतने बड़े बड़े दांत थे, जो कृष्णा ने भगवत गीता में डिस्प्ले किया था, विभत्स भयंकर फियरसम फॉर्म, जिसको फियर पर्सोनिफाइड, जिससे फियर भी डरता है. कुंती महारानी बोलती हैं कि आपसे फियर पर्सोनिफाइड भी आपसे डरता है. तो वो फॉर्म देखनी है, या वो प्यारी चार्मिंग मुरलीधर फॉर्म देखनी है, जो सर पे मुकुट है और उसमें पीकॉक फेदर है और इतनी बड़ी स्माइल है फ्रॉम ईयर टू ईयर, वो देखनी है. सो चॉइसेस आर, सो वी ऑल गेट द चॉइस, बट this is what happens to the people who are wasting the time. That decreases the duration of the life of everyone except one who utilizes the time. 18,000 श्लोक है. यस माता जी. तो हाँ, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ है इसमें. नेक्स्ट बात ये है, तो हमने ये सुना कि फियर क्यों होता है? फियर होता है बिकॉज ऑफ बॉडीली आइडेंटिफिकेशन या एब्जॉर्प्शन इन दिस वर्ल्ड, राइट? अब नेक्स्ट बात है, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं स्वयं ब्रह्मा जी. तो ब्रह्मा जी भी नहीं बचे हैं फियर से. ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स. एंड इफ यू हैव द पर्पट ऑफ दिस वर्स, print the purport, paste it on your wall, read it every day, because every single line is gold. Every single line is like a jewel. So Prabhupada has, I mean, Prabhupada's Srimad Bhagavatam is full of Bhagavad Dharma. It is full of divine love for Krishna. So what does he say? Brahmaji says, and by the way, these are Lord Brahma's prayers that we are reciting. If you can recite every day a little bit in this Purushottam month, 10th canto, 14th chapter. Tatte nukampam susamikshmano bhunjana evatma kritam vipakam ridvagvapurvir vidahan namaste jivetyo mukti pade sadaya bhav. He says कि जो आपकी मर्सी के लिए वेट करता है, जैसे कि अगर आपके पास कोई विपदा आई, कोई प्रॉब्लम आई, अगर वो व्यक्ति उसको टॉलरेट कर लेता है, knowing that this is your arrangement, knowing that this is his just karmic reaction, he has to tolerate it, और वेट करता है आपकी दया की कि जब मेरा ये समय निकल जाएगा, he just bides his time through that difficult time. Just bide your time, it will pass, because everything is temporary in this world. The bad time will also go away, just like the good time goes away, the bad time will also go away. तो जो आपकी इस कॉजलेस मर्सी की वेट करता है, पेशेंटली सफरिंग द रिएक्शंस
of his past misdeeds. अपने previous karma को झेलता रहता है patiently. And even in that bad time, he's paying obeisances to you. Mostly लोग क्या करते हैं? They become separate from Lord at that time. वो blame करने लगते हैं, हमने क्या बिगाड़ा था, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये वो. But he actually, even that time, he's offering respectful obeisances with his heart, words, and body. That person is eligible for liberation because it has become his rightful claim. तो जो आपकी अनुकंपा की wait करता है कि कब आपकी special causeless mercy मिलेगी. Why? Because he knows that this reversal that is happening to me right now, this problem that has come to me, it was because of my own previous karma. It was a reaction that I had to suffer. It is something for my purification. I had to go through this to get to a better part of my life. This is meant for my purification. This is nothing but Krishna's arrangement for me. And actually, the reaction is not as bad as I deserve. Actually, I deserved even worse, but Krishna has decreased it. He has decreased the amount of reaction that I'm getting. This is what such a person, a devotee thinks. कि जो भी मुझे मिल रहा है वो मुझे tolerate करना चाहिए, वो मेरा अपना किया है. If somebody is giving you, that problem, that disturbance in your life, if it's another person, he forgives that another person because that other person is just an instrument of delivering your own karma, right? जैसे आपने कोई हथौड़ा लेके सर पे मार ले तो उसमें किसकी गलती है? आपने ही गलत किया ना अपने हाथ से. तो आपने ही कभी कुछ पास्ट में गलत किया है जिसकी वजह से आपको अभी आज दर्द हो रहा है, चोट लग रही है. Okay, so devotee understands that, and devotee also knows that Krishna is his best friend. Krishna says in Bhagavad Gita, Suhridam Sarva Bhutanam. And Krishna does not make any error. He is infallible. He's not error prone. To err is human, but not Krishna. He doesn't make any errors. And he also knows that Krishna is complete knower of everything, right? उनको हमारा past, present, future सब पता है. तो क्योंकि उनको हमारा future पता है, इसीलिए हमको ये अभी मिल रहा है ताकि हमारे future के लिए somehow it is good for us, right? तो इसीलिए कृष्णा ने ये arrange किया है मेरे लिए ताकि I can suffer this right now. तो फिर क्या होता है? अब एक अलग महाभागवत का एडवेंचर लेते हैं. ये तो दिस एडवेंचर एवरीबॉडी इज फेमिलियर विद. सो जब कोई ऐसा डिवोटी होता है जो टॉलरेट करता रहता है, जो बाइट करता है थ्रू दैट रफ टाइम, जो ही नोस कि ये मेरा ही प्रीवियस कुछ रिएक्शन है, कि कृष्णा की कॉजलेस मर्सी आने ही वाली है, वो क्या उसके साथ कृष्णा कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं? He can go to any extent. Krishna will go to any extent, make such wonderful arrangements for that devotee. And you can see that in the life of Prahlad Maharaj. What did he do? Satyam vidhatum nijpretya bhashitam vyaptim cha bhuteshva khileshu chatmana adreshyatma adbhutrupamudvahan Stambe sabhayam na mrigam na manusham. He took that form. कितनी fearful form थी, इतनी fearful form कि सारे प्रहलाद के डर दूर हो जाएं, राइट? किसी के भी डर दूर हो जाएं. आजकल भी अगर हम अपने डर दूर करने हैं तो हम नरसिंह देव को याद करते हैं, राइट? So he took that absolutely wonderful, fantastic form, nrigam na manusham, half animal, half human की form ली, half lion, half man की form ली, right? So amazing things Krishna will arrange for you, right? But what we have to do, what Brahma ji said, कि wait patiently, tolerate the difficulties, okay? And then this is another example of what Lord can, the extent that Lord can go to reciprocate with his devotees, and this is seen in the life of Ambarish Maharaj. What did he, भगवान ने क्या बोला जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मारने की कोशिश की? तो क्या बोला भगवान ने? उन्होंने बोला, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र द्विजा साधु वीर ग्रस्ता हृदयो भक्तिर भक्ता जना प्रिया. He said that, oh Brahman is Durvasa Muni, I am completely under the control of my devotees. तो बोलते हैं कि मेरे पास मत आओ, अगर बचना है, अगर मेरे सुदर्शन चक्र से बचना है तो मेरे डिवोटी के पास ही जाओ, क्योंकि मैं तो उसी के कंट्रोल में हूँ. सो भगवान अपने आप को बेच देते हैं, भगवान अपने आप को डिवोटी के लिए बेच देते हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं. He says here, अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ ही नहीं. ही अस्वतंत्र इव द्विजा, ओ ब्राह्मण मैं तो स्वतंत्र हूँ ही नहीं, इंडिपेंडेंट हूँ ही नहीं.
मैं इंडिपेंडेंट लॉर्ड ही नहीं हूँ, जबकि हमें पता है ही सुप्रीमली इंडिपेंडेंट लॉर्ड. एंड देन ही टेल्स दुर्वासा, साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं त्वहं मद अन्यते न जानाति नाहं तेभ्यो मनागपि. He says कि जो प्योर डिवोटी होता है वो उसको मैं अपने दिल में रखता हूँ, वो मेरे he stays within the core of my heart. This is all Bhagavatam. This is all the pearls coming from Srimad Bhagavatam, various cantos, various chapters. I am always in the heart of my pure devotee, और मेरे devotee do not know anything else but me and I do not know anything else but them. तो किसी के ऊपर इतना बड़ा हाथ है, इतना अमीर आदमी, इतना सुप्रीमली इंडिपेंडेंट आदमी, इतना सुप्रीमली ब्यूटीफुल, सुप्रीमली पावरफुल आदमी का हाथ है, तो डर किस बात का? तो इसीलिए डिवोटी को डर नहीं लगता, राइट? हरी हरी बोल. हरी बोल. बैठ नहीं सकते, इसे पकड़ सकते, तो खाली लेके हम अभी 2-3 दिन पहले 10 बार दिए, एक बार बैलेंस नहीं है, परंतु तुम्हारे भगवान का है कि अच्छा कार्य के लिए आप कुछ भी करो तो भगवान पार करेंगे, हम खुद जानते हैं. अगर So so जब भी दिक्कत आए, just take shelter of Krishna, like all these great examples there in Srimad Bhagavatam, right? द्रौपदी ने, मदर द्रौपदी ने बोला था, प्रतिज्ञा, ये महाभारत में वर्ष आती है, प्रतिज्ञा तव गोविंदा नामे भक्ता प्रणश्यति इति संस्मृत्य प्राणान् संधाराम्य हम. कि भगवान ने भगवत गीता में ये प्रतिज्ञा ली थी. क्या प्रतिज्ञा ली थी? Who can quote that verse that Mother Draupadi is quoting in this verse? What did Bhagwan say in Bhagavad Gita? No, he said, yes, please. Yes, क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि नामे भक्त्या प्रणश्यति. हरि बोल. So भगवान ने भगवत गीता में बोला था, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त को कुछ नहीं हो सकता. तो मदर द्रौपदी उनको वो याद करा रही थी प्रतिज्ञा. उन्होंने बोला कि प्रतिज्ञा तव गोविंदा नामे भक्ता प्रणश्यति इति संस्मृत्य, मतलब मैं ये याद कर करके प्राणान संधाराम्य हम, मैं अपने प्राण बचाए हुए हूँ, मैं अपने लाइफ मेंटेन किए हुए हूँ, क्योंकि मुझे आपकी प्रतिज्ञा याद है कि मेरे भक्त का कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता, मेरा भक्त कभी लॉस नहीं हो सकता. तो इसलिए जो भक्त है वो क्या करता है? दे यूज डिफिकल्टीज एज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, नॉट टर्न अवे बट एक्चुअली लैच ऑन स्ट्रॉन्गर हार्डर टू कृष्णा, राइट? और जोर से पकड़ लो, क्योंकि सड़क है, सड़क पे दोनों हर तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, हर तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही है, ट्रैफिक आ रहा है बहुत जोर से. अपना जो फादर है उसकी आर्म पकड़ लो, गोद में चढ़ जाओ, राइट? गोद में चढ़ जाओगे तो वो निकाल देंगे आपको, अकेले बचते रहो गाड़ी से इधर उधर, राइट? तो इसलिए हमको भी भगवान को और पकड़ लेना है, सहारा ले लेना है. So इसलिए devotees, no blame, no complain when things happen, no criticism, just remember Shipram Bhakti Dharmatma, right? So then last point for today, how do we rid of the fear? Okay, तो fear को कैसे हम रोक सकते हैं, हमने पढ़ लिया. ये बहुत ही सुंदर वर्स है, और आप ये भी ब्रह्मा जी ने बोली है, same 10th canto 14th chapter in Brahma's prayers. And listen to the poetry in this verse, listen to the prose, the meter in which it is composed. It is wonderful. Not only Bhagavatam ki verses instructional hai, devotional hai, motivational hai, all those things, but they are also so beautiful, so rhythmical. इतनी सुंदर है गाने में, right? तो क्या बोलते हैं? समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदेवात्पदं परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषां. पदम वर्ड कितनी बार यूज हुआ है? किसी ने काउंट किया? हर लाइन में हुआ है. समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम भवाम्बुदेवात्सर यशो मुरारे भवाम्बुदोवत् यशो मुरारे. एनीवेज, पदम पदम विपदाम नतेशम. तो इसमें क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं कि जिन्होंने आपके लोटस फीट को पकड़ लिया है, ठीक है, उसके लिए इस दुनिया का जो भव सागर है वो कैसा हो जाता है? भव सागर तो बहुत बड़ा होता है, ओशन इज वेरी वास्ट,
लेकिन एक एक काफ है, एक गाय का बछड़ा है, ठीक है। कैन एवरीबडी इमेजिन अ काफ? काफ का फुट कितना छोटा होता है? काफ का जो पद है, मतलब जो काफ का हुफ प्रिंट है, वो अगर लगा हो जमीन पे तो संसार का भव सागर उस काफ के हुफ प्रिंट में जितना पानी आएगा उतना हो जाता है। तो कितना सुंदर बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, राइट? लुक एट हिज, ब्रह्मा जी इज मेड ऑफ इंटेलिजेंस, हिज होल बॉडी इज मेड ऑफ इंटेलिजेंस, सो ही कैन मेक कंपोज सच prayers. But he says this beautiful verse, that everything, that the goal is param padam, the goal is your lotus feet, and whoever grasps your lotus feet, then the whole worldly ocean, this whole bhautik sagar becomes as small as the water contained in the footprint of a calf's hoof. तो इसका मतलब कि और दूसरी बात क्या बोली है इस वर्ष में? पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, कि इस दुनिया में पद पद पे विपदा है, पद पद पे डेंजर है, हर पॉइंट पे डेंजर है। वही कि सड़क पे जा रहे हो, इधर से भी कार आए तो बहुत डेंजर है, बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं, बहुत डिस्कम्फर्ट्स हैं, लेकिन जिसने ये किया, जिसने आपके पैर पकड़े हैं, उसको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं फील होगा। तो इसीलिए हमें इतने डिस्टर्बेंसेस हैं, इसीलिए हमें इतनी इंश्योरेंसेस लेनी पड़ती है या नहीं? कोई कभी कार की इंश्योरेंस, कितनी इंश्योरेंस है? कार की, घर की, अपनी मेडिकल इंश्योरेंस, हम लोगों के लिए मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस, हाँ, और लाइफ इंश्योरेंस, कितनी कितनी इंश्योरेंसेस, कितनी पेट्स की इंश्योरेंस। तो हर किसी की इंश्योरेंस क्यों निकालनी पड़ रही है? क्योंकि हर किसी पे खतरा है, हर किसी पे डेंजर है। अगर डेंजर नहीं है, अगर आप इतनी ही ये खुशहाल दुनिया है, तो फिर क्यों लेते हो इंश्योरेंस, राइट? सो लेकिन उनके लिए पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, उनको कोई विपदा फील नहीं होती। ऐसा नहीं कि उनको विपदा नहीं आती, लेकिन वो विपदा को से इतने ऊपर उठ जाते हैं, उनका विजन इतना हाई है, इतना एलिवेटेड कर लिया उन्होंने, तो दुनिया की प्रॉब्लम्स आनी बंद नहीं होंगी, लेकिन आपका विजन टू दैट प्रॉब्लम विल चेंज बेसिकली एज बिकमिंग अ डिवोटी। फिर आगे बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, ये भी बहुत ही अच्छी वर्स है। नारायणा परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्व अपि संसार तुल। कैन यू ओपन दैट? 6.17.28 नारायणा परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्व अपि तुल्यार्थ दर्शना। ना कुतश्चन बिभ्यति, कि जो नारायण को सबके, जिसने पैर पकड़े हैं, उसको किसी चीज से डर नहीं लगता। ना कुतश्चन बिभ्यति, बिभ्यति मतलब डर लगना, ठीक है। स्वर्ग में हो, अपवर्ग मतलब नर्क में हो, स्वर्ग नरकेश अपवर्ग, चाहे वो इस दुनिया में हो, स्वर्ग में हो, नर्क में हो, अपवर्ग इस दुनिया को बोलते हैं। स्वर्ग नरकेश, चाहे वो स्वर्ग में हो, नर्क में हो, उसको किसी भी चीज से डर नहीं लगता। ना कुतश्चन बिभ्यति अपि तुल्यार्थ दर्शना, वो सबको एक जैसा ही देखता है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे कि डिवोटी अगर जेल में है, जैसे जेल में ले जाते थे ना कई बार, अगर जेल में भी है तो क्या है, वो तो वहां बैठ के हरे कृष्णा ही चैंट करेगा, तो वो तो घर में भी हरे कृष्णा ही कर रहा है और जेल में भी हरे कृष्णा ही कर रहा है। तुल्यार्थ अपि तुल्यार्थ दर्शना, उसके लिए एक ही बात है, उसके लिए घर में बैठना, घर हो, वन हो, कहीं भी हो, जॉब हो, उसने तो अपने मन से, अंदर से वो भगवान से ही कनेक्टेड है। तो बाहर की एक्सटर्नल सिचुएशंस में चेंज फॉर हिम, ऐसा लगेगा एक्सटर्नली बहुत डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, बट एक्चुअली ही इज कनेक्टेड टू द लॉर्ड। ये एग्जाम्पल के बिना we cannot stop, because this is the example of a very very great personality who went through a lot of problems and and still, let's see what she said. So she said, this is Queen Kunti's prayers. विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया वनवास कृच्छ्रिता मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रतो द्रोणी अस्त्रतश्चाश्मा हरे विरक्षिता। She said, विषान, विष से आपने हमको बचाया। तो जिनको महाभारत आती है वो विष का सिग्निफिकेंस जानते हैं। पॉइजनस खीर खिलाई थी भीम को, महाअग्नि, एक बहुत बड़ी आग लगाई थी उनके घर को, राइट, दाक्षाग्रह बनाया था जो। पुरुषाद दर्शनात्, मतलब कि जब वो वन में रहे थे तो बहुत कैनिबल्स वगैरह वहां पे रहते थे, जो कैनिबल्स का मतलब है जो डीमंस या दैत्य होते हैं, राइट, उनसे उनको बचाया। असत सभाया, द इनऑस्पिशियस असेंबली where Mother Draupadi was dishonored. असत सभाया, वनवास कृच्छ्रिता, और जब हम वनवास में, एग्जाइल में चले गए इन द फॉरेस्ट, तो वहां पर भी कितनी प्रॉब्लम्स आए, वहां पे भी आपने हमको बचाया, वनवास।
मृदे मृदे अनेक महारथास्त्र तो, और जब वॉर हो रही थी तो कितने महारथी आए जिनके सामने हम खड़े भी नहीं हो सकते थे, लेकिन हमने उन सबको हरा दिया, उन अनेक महारथियों को हरा दिया। क्यों? क्योंकि आप थे। द्रोणी अस्त्र, और जो लास्ट था वो था द्रोणी मतलब द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा ने जो अस्त्र फेंका, उससे भी अब आपने हमको बचा लिया। सो हरे हरे भी रक्षिता, कि आपने हमको प्रोटेक्ट किया फ्रॉम ऑल दीज। तो इसलिए वो बोलती हैं, अब ये बहुत ही फेमस वर्स, इट्स अ मेमोरी वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। आपने हमको इतनी विपदाओं से बचाया, इतनी प्रॉब्लम से बचाया, लेकिन जब भी विपदा आई उसमें बेनिफिट क्या था? कि आप भी आए साथ में आप भी दिखाई दिए, राइट? एवरी टाइम वी कनेक्टेड टू यू। सो शी सेज विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि जब भी ये कैलेमिटीज आई तो आप भी आए बार बार। सो इफ seeing you means that we will no longer see repeated birth and death, तो मुझे बार बार विपदा दो ताकि बार बार मैं आपके दर्शन कर सकूं। हाँ, क्वीन कुंती बोलती हैं। ये क्या है, कृष्ण भगवान जब जा रहे थे द्वारका, बोले कि मत जाओ। यस यस, द्वारका जा रहे थे तो बोलते हैं कि मत जाओ, क्योंकि जब जब विपदा आई थी तो आप भी आए थे, तो मुझे विपदा और दे दो, मुझे डिफिकल्टीज और दे दो, क्योंकि दैट मीन्स आई कैन सी यू। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम, कि इसका मतलब ये है कि आप आओगे, आप दिखोगे तो हमें इस भव का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। यस माता जी। हाँ, बाहर बॉडीली प्लेटफॉर्म पे कुछ भी हो सकता है, भतीजा या जो भी, लेकिन अंदर से शी इज अ डिवोटी। बोलते हैं एक्चुअली तो भगवान है। Yes, Mother. So, so this is the state of the devotee, that they connect to the Lord in all circumstances. Last चीज है कि 12th canto. Please 12th canto खोल सकते हैं, so we can finish up this part. This is the last chapter of 10th canto. उसमें ये बोला जाता है कि ग्लोरीज, उस चैप्टर का ही नाम है ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। उसमें ये बताया गया कि क्यों हमें श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए, कि इस कली में, इस कलयुग में बहुत दोष हैं। कलेर दोषा निधे राजम अस्ति ही एका महान गुना, लेकिन एक गुण है, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम रजेत, की भगवान का नाम लेने से, हरे कृष्णा महामंत्र बोलने से, बार बार भगवान का नाम लेने से। सो please loudly chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। तो भगवान का नाम लेने से आप भवसागर पार कर सकते हो। सिर्फ एक ही चीज करने की जरूरत है कलयुग में, और कुछ कर ध्यान में नहीं बैठने की जरूरत, योगिक पोस्चर्स लाइक अ मंकी, नो नीड टू डू ऑल दोस। वन में जाने की जरूरत नहीं। प्रभु जी, आपका क्वेश्चन कि वन में जाने की जरूरत नहीं है कलयुगा में करने के लिए। कलयुगा में करने के लिए बैठ के भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा महामंत्र जपना है। इसलिए जब कीर्तन हो रहा था तो आई वाज टेलिंग यू टू चैंट, बिकॉज ईच नेम ऑफ कृष्णा इज वेरी वेरी पोटेंट। So we don't have to be saying all these nonsense things of this world that do not need to be uttered from our tongue, polluting our tongue the whole day. But when it comes to chant the names of Krishna, we are tight-lipped, tight-mouthed. Why is that? Why is that? Why are we so averse to the Lord? Just chant the names of the Lord. Say Hare Krishna. Chant loudly so He can hear you. And then when the difficulties come, we cannot say, oh, Krishna didn't save me. No, you never put yourself in His hand. You were never holding His hand to cross the road. So how can you say that He never saved you? You never held His hand. So you were on your own. So if you're on your own, then you will get struck by the car, by the bus. Okay, right? So please take any opportunity you can to attend the katha, to chant loudly, to say the names, to sing the kirtan, to do the deity worship, to offer the lamp, to offer the flower, to hold the book, to say one word of any verse, anything. Krishna is so supremely merciful, he will give benediction for just uttering one name, one time. Bhagwan Ram says, Sakradeva prapanno yastava smiti cha yachate abhayam sarvada tasmai dadami etad pratam mama, कि कोई एक बार ये बोल दे कि भगवान राम मैं आपका हो गया। कोई एक बार ये बोल दे, अगर रावण एक बार आके मुझे ये बोल दे कि मैं आपका हो गया, मैं ये व्रत लेता हूँ अभयम सर्वदा तस्मय, कि मैं उसको अभय दान दूंगा, तो हमें किस बात का डर?
राइट? अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। भगवान ने कितने प्रोमिसेस किए हैं, भगवत गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, श्रीमद् भागवतम is full of these promises. All we have to do is to chant the name, to connect to Krishna, and this is the best way to connect to Krishna. ऐसा भागवतम की जो चैप्टर था जो आप देख रहे थे, उसमें बोलते हैं कि निम्न गणाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैश्वानाम यथा शंभु प्रपुराणा नाम इदम तथा, कि जैसे रिवर्स में गंगा है, निम्न गणाम यथा गंगा, राइट? देवानाम अच्युतो यथा, देवों में जैसे भगवान विष्णु हैं, वैष्णवों में जैसे भगवान शंभु हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा, पुराना जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण हैं, उनमें श्रीमद् भागवतम है, पुराना नाम इदम तथा. So what are you waiting for? Everybody should invite Bhagavatam to their homes and make sure that this book, manifestation of Krishna, this book form of Krishna, this Granth Avatar, Granth Raj, Srimad Bhagavatam is in their homes, and you're touching it, you're reading it, you're opening it, you're reciting the verses, the beautiful, intelligent verses of Queen Kunti and Prahlad Maharaj and Brahma Ji and Uttara and Parikshit Maharaj and all these great devotees, Amrish Maharaj, right, recite their prayers and read their prayers. And it says, simply by giving reception to this Vedic literature, the feeling for loving devotional service to Krishna sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion and fearfulness. तो जो हमें ये भय है, जो हमें शोक है, lamentation है, जो हमें illusion है, right, pride है, ये सब चीजें, ये जो गंदगी है चली जाती है just by hearing this beautiful, glorious description of Krishna. So this is all I have to share. Any questions or realizations, doubts? Any questions? भगवान में कौन सबसे बड़े हैं जानते हैं? Yes, माता जी. ये तो बच्चे भी जानते हैं, I think. आप बोलिए कौन बड़े हैं? तो पहली बात तो उनमें कोई ऐसी होड़ नहीं है कि बड़े छोटे होने की. सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड का मतलब है सबसे उत्तम जो है. ये पुरुषोत्तम मंत्र है. पुरुषोत्तम का मतलब जो पुरुषों में सबसे उत्तम है. तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये सब एक्सपेंशंस हैं जो कृष्ण से आती हैं, और ये सब श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में ही दी गई हैं कि पुरुषोत्तम कौन है. और भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय में बार बार बोलते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ. इट्स कॉल्ड पुरुषोत्तम योगा, योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन. So the supreme person is Lord Krishna, and he is the supreme personality of Godhead, and all other expansions were him. तो बस यही याद रखने की बात है, और हम उनके part and parcels हैं, servants हैं, and we just have to accept that servitude position. और कोई question, please? Any reflections, realizations, or you want me to pick somebody to share? Priyanka Mataji, you would like to share something? Something that you liked, a point that you're taking home? So many others. One point that comes to mind. Sorry for putting you on the spot, but I saw you listening intently, so. I'm just trying to recollect further. I was listening. I tend to be listening. It's just that how much do I recollect? And one thing we take, I mean, yes, peace. Like Bhagwan ke sharan mein jana hi is the ultimate option. Like that's the best option we have. So that's my take on this point. तो कैसे भगवान की शरण में जा सकते हैं? डेली बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि हम भगवान की शरण में जा सकें? तो सब एक एक पॉइंट कोई शेयर कर सकता है कि क्या कर सकते हैं हम डेली बेसिस में भगवान की शरण? अब ये तो बोलना आसान है कि शेल्टर लेना है भगवान का, पर कैसे शेल्टर लेना है? Just remembering that it sounds like he is there. Okay. इस युगा में क्या बताया गया है, कैसे भगवान को रिमेम्बर कैसे करते हैं? आपने बोला रिमेम्बर, हाँ, और जाप ऐसे करना है कि वो बोलो और वो सुनाई दे, राइट? ओके, यस. सिर्फ मन में नहीं बोलना है और सुनाई देना चाहिए. वाचिक
because we are not that intelligent कि हम मन मन में याद रहेगा. So we have to sit and chant and hear it, right? Okay, so chanting is one way. और कैसे भगवान का सहारा ले सकते हैं? नाम से ले सकते हैं. Everyone. And doing your duty with Krishna. Yes, so with detachment, right? Okay, yes, Mataji. Mataji, want to share something? Reading Scriptures, yes. Bhagavad Gita, Bhagavatam, हमने अभी बोला ना, Bhagavatam is Krishna's manifestation, Krishna's book form, right? This is the spotless Amal Puran. So इसमें इसके through आप भगवान से connect हो सकते हैं. नित्यम भागवत सेव्या, right? नष्ट प्रायश्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या. Yes. Prabhuji, you want to share how else can we connect? How to take shelter of Krishna? Listening to the lectures from the Guru and Vaishnavas, senior Vaishnavas. Hearing. Yes. श्रवणम से, right? Here. तो अपनी सारी senses use कर रहे हैं, right? आपने अपनी टंग से chant किया और माइंड से सुना. आपने अपने कानों से हियरिंग कर रहे हो, श्रवणम कर रहे हो भगवान की कथाओं का, उनके पास टाइम्स का, उनके नामों का, उनकी क्वालिटीज का. और भगवान को आपको ऑफर करना है, प्रसाद ग्रहण करना है. प्रसाद अपनी टंग से आप खा रहे हो. तो अपनी इंटेलिजेंस से आप रीड कर रहे हो, स्क्रिप्चर्स रीड कर रहे हो, राइट? और क्या कर सकते हैं? Yes, always remember Krishna, never forget Krishna. That is the prime rule, and every other rule is subservient to that rule, right? So there is only one important principle to follow. Okay, nice. And then deity worship se connect kar sakte ho. Follow the instructions given in the scriptures, right? Scriptures को सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना, scriptures को भगवान के भक्तों के association में पढ़ना है. भागवतम को बुक की तरह ट्रीट करोगे तो वो आपको रिवील नहीं करेगी. It is not like a law, even a law book or a medicine book. When you read, you have to read under the care or under the instruction of some superior, right? Some teacher. Even material books, medical book or law book भी आपको समझ नहीं आएगी. तो ये तो बहुत ही highest subtle science है. This is spiritual science. तो इसको पढ़ने के लिए devotees can reveal this to you. So read this in association of devotees, right? तो बुक होना, इसको बुक की तरह ट्रीट करने से फायदा नहीं होगा. This is Bhagwan who's going to reveal himself to you more and more. The more you enter into the pages of Bhagavatam, the more and more Krishna will reveal to you. So the more and more things will become clear, and all the inauspiciousness will go away, and all the fearfulness will go away. So this is how you can overcome fear. Mataji, you want to share something? Anita Mataji? Yes, Mataji, so Hare Krishna. The one point that comes to my mind is that in Kali Yuga, where like we all are so much entangled and जिसको बोलते हैं ना भागा दौड़ी में लगा हुआ है. तो सबसे बड़ा सर्विस भगवान के लिए अभी के टाइम में कैसे कर सकते हैं कि भगवान से कनेक्ट करवा सकते हैं लोगों को, जैसे कि आप तो कर रहे हो. Like there are so many people like yourself who is like trying their best to connect souls like us to God. I think that is the biggest service that you are doing to Lord. मैंने जहाँ तक सुना है कि जैसे हम भगवान के लिए वेट कर रहे हैं, भगवान भी हमारा डेली ये से वेट कर रहे होते हैं. तो अगर आप किसी को कनेक्ट करवा रहे हो भगवान से, तो आई थिंक भगवान के लिए वो सबसे बड़ी बात है. Yes, so to share the knowledge, right? Okay, भागवतम की ये लास्ट में बोलते हैं कि ये जो भागवतम है तद एव रम्यम रुचिरम नवम नवम. तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार पढ़ ली, जैसे कि कोई स्टोरी पढ़ते हैं, हैरी पॉटर पढ़ते हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ते हैं, राइट? तो फिर वो पढ़ के वो पुरानी हो जाती है, फिर दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता. इवन वो भी लोग बार बार पढ़ते हैं. भागवतम ऐसी है जो रुचिरम नवम नवम, बार बार न्यू एवर फ्रेश है, बार बार नई नई चीजें रिवील करेगी. वही पास टाइम्स बार बार नई नई चीजें रिवील करेंगे. तद एव शाश्वन मनसो महोत्सवम, ये एक फेस्टिवल क्रिएट करेगी. इट इज लाइक द परपेचुअल फेस्टिवल फॉर द माइंड. तो इतनी जॉय मिलेगी, इतना ब्लिस मिलेगा, इतना आनंद आएगा. दे ड्राई अप द ओशन ऑफ द मिजरी. शोकार्णवा शोषणम ऋणाम, की जो शोक का अर्णव है, अर्णव क्या होता है? ओशन. जो शोक का ओशन है, जो मिजरी का, लेमेंटेशन का, एंजाइटी का, फियर का ओशन है, शोषणम, वो सूख जाएगा. So this is the best. People do drugs, people do alcohol, people do so many things to take themselves away from the misery of this world.
but that those things pull them down. Why not elevate yourself? Why not immerse yourself in the joy, in the nectar that is ever fresh, ever increasing, that is permanent, that is always blissful, and that creates festival of the mind. It is manaso mahotsavan, jo man ka mahotsav hai. So such powerful things, such beautiful things are in there, that you will discover Krishna more and more. You will discover your relationship with him. You will establish your relationship with him. You will understand how am I related to Krishna, and you will start seeing him in your day-to-day life. His hand, his arrangement. You will start reciprocating with him on a daily basis. इसलिए devotees ऐसे बातें करते हैं, ये कृष्णा ने मेरे साथ जोक प्ले किया है, ये कृष्णा का हाथ है इसमें, ये कृष्णा का अरेंजमेंट है, इसमें जरूर कृष्णा की कोई इच्छा रही होगी, इसीलिए मुझे ये ऐसा भुगतना पड़ रहा है अभी. तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि कोई पर्सन, उनका कोई रिलेटिव होता है जिसने कुछ किया है. So if you want to have that personal relationship with the Supreme Father, immerse in Srimad Bhagavatam. That is my request, humble request to you. Please invite Srimad Bhagavatam. एक किसी डिवोटी से पूछा था कि अपनी लाइफ कैसे अच्छी कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि if you have not invited Bhagavatam into your life is not begin yet. Your life is still inauspicious. So the life's auspiciousness has not started. So please invite Srimad Bhagavatam into your house. This is Krishna himself, and he has arisen in Kali Yuga to give all light, all knowledge, all joy. So it will bring unlimited joy to you. Hari bol. Mancha kaltarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Thank you everyone for joining. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Jai Shri Radhe Shyam.